Hello friends, it's me Kaushiki here and I am a fertility specialist trained from University of Valencia, Spain and from University of New South Wales, Sydney in IVF and reproductive medicine. So today we will demystify AMH. What does low AMH means or signifies? Does it mean low fertility? The answer is no. Low AMH doesn't necessarily mean low fertility, but what does it mean? You need to see this video till the end to understand what it is, what AMH is, and what it means. So, AMH is also called anti-Mullerian hormone, जो कि फीमेल्स में बनता है फ्रॉम द ग्रैनुलोसा सेल ऑफ द डेवलपिंग फॉलिकल. जो फॉलिकल जिनमें कि इवेंचुअली अंडा बनना है, उनके उस पे ग्रैनुलोसा सेल होता है और उससे बनता है anti-Mullerian hormone, and that is the reason more are the follicles present in the ovary, more is the anti-Mullerian hormone level of the female. So that way it denotes that it shows the ovarian reserve of the lady. Naturally ज्यादा follicle है, ज्यादा AMH है, ठीक है. AMH का काम क्या होता है? AMH का काम जो होता है, वो बॉडी में ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं बन जाती है, उससे पीछे कुछ काम है. उसका काम ये होता है कि पर साइकिल एक ही अंडा रिलीज हो और वो AMH basically stops ovulation from happening, right? So it might seem a little paradoxical, and that is the reason why ladies with PCOD, they have got high AMH. उनके पास बहुत follicles होते हैं, बट उनका AMH भी हाई होता है, और उनका AMH हाई होता है इसके कारण से उनको ovulation होने में डिफिकल्टी होती है. बट उनके पास और एडवांटेजेस हैं जो मैं किसी और वीडियो में कवर करूंगी. बट हियर वी आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग आवरसेल्फ टू व्हाट हैपेंस इफ यू फाइंड लो AMH. डू यू नीड टू जस्ट गेट फ्रस्ट्रेटेड और डू यू नीड टू पैनिक? एक्चुअली यू डोंट नीड टू. See, there are two type of people who we will diagnose having low AMH. एक जिनको कि ऑलरेडी इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा है, जो कि ट्राई करने की कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं सिंस लास्ट 12 months or so, and despite they are unable to conceive, and then they go for a test and then we find that the AMH is low and there are other factors which are complicating the conception. So obviously we know that the ovarian reserve is less and we need to hasten the process. We might need to go for a IUI or a IVF based on how many months they have already tried. But suppose करें आज के टाइम में काफी ट्रेंड हो गया है कि भाई लोग लेट 20s में अर्ली 30s में एक बार जब जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, दे एज अ प्री कंसेप्शनल टेस्ट AMH करवा देते हैं. और AMH में यंगस्टर्स में भी कई बार आता है कि उनका AMH जो लेवल है वो कम है. नाउ डज इट मीन कि उनकी फर्टिलिटी लो है? यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी 30-year-old का incidentally they have never tried for conception and AMH turns out to be low, does it mean that their fertility is on the lower side? Does it mean that if they try for conception they would find it more difficult to conceive in comparison to somebody who had a higher AMH? The answer is no. They won't face any such problem, and the conception rate is in fact slightly higher, not less, when the AMH level is on the lower side in a younger female as compared to somebody who has got a lot higher AMH. उनके कंपैरिजन में उनकी फर्टिलिटी जो डेटा पाया गया है कि आफ्टर 6 months of trying properly for conception or trying for 12 months after trying conception, once the AMH was found to be low and they don't had any history of इनफर्टिलिटी, उनमें कंसेप्शन रेट जो है वो नॉर्मल से ज्यादा ही था, कम नहीं था. सो दैट मीन्स कि अगर किसी का AMH लेवल कम आता है और वो यंग है और उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया है कंसेप्शन के लिए, डोंट पैनिक. इट योर लो AMH इज जस्ट टेलिंग दैट योर ओवेरियन रिजर्व्स आर लेस. सो ऑब्वियसली अगर ओवेरियन रिजर्व लेस है और आप देर एज तक वेट करते रहेंगे तो वो ओवेरियन रिजर्व भी आपका खत्म हो जाएगा. लेकिन उस दौरान अगर आप यंग हैं और AMH आपका लो है तो आपकी फर्टिलिटी रेट पे कोई भी आंच नहीं आ रही है. सो इट सिंपली मीन्स दैट जस्ट स्टार्ट ट्राइंग फॉर कंसेप्शन और गेट द एग फ्रोजन. वो भी ऑप्शन, अगर आप मेंटली रेडी नहीं है, सोशली रेडी नहीं है, फाइनेंशियली रेडी नहीं है, तो यू कैन गेट द एग फ्रोजन फॉर अ लेटर डेट. बिकॉज उस एज पे इवन इफ यू हैव गॉट अ लो AMH, सपोज यू आर अ 27-year-old or 26-year-old or a 30-year-old with low AMH, but the quality of your egg is better than suppose there is a 35 or a 36-year-old with a
higher AMH than you, right? So low fertility doesn't mean, low AMH doesn't mean low fertility. It doesn't mean that you are doomed. It just means that you need to take action fast. Either try to conceive spontaneously or try to get the egg frozen at that point of time, so that you can get better results in the future. And to understand about egg freezing, I've already done a video. Do have a look at that, and that will help you understand about everything about egg freezing. So I will be back with you with more knowledge in the layman terms, so that you understand it better, and yeah, take your decisions accordingly. And till we meet next time, have a good day ahead, and till then, bye bye.